So I'm starting with today's discussion. So yesterday we were discussing about stress at a point. So we defined stress at a point by considering a differentially small control volume about that point, and in the limit, taking this differentially small control volume to zero, we could define actually stress at a point Q. Now, I'm taking this forward, and in the global view, what we have done is we have converted force to stress, then stress to strain rate, and this stress is our topic of study. So stress we have already defined at a point. Now, if I ask you, how many of you have heard about this term? I think you are doing solid structures. How many of you have heard about this term, principal stresses? Have you heard about this term, principal stresses? Anyone? Have you heard about this term, principal stresses? Akash? सर अभी वैसे टॉपिक शुरू नहीं हुआ अभी क्लास में अच्छा, इसलिए क्लास में आया नहीं स्टार्ट नहीं हुआ कुछ अभी कल बता रहे थे आयुष आयुष सर ये सर वो have पढ़ाया you था खाली have you वो started with principal stresses? नहीं सर प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं पढ़ाया सर अभी मतलब वो पढ़ाया था खाली वो जो कल वो ये आपको सर अभी बताया जो था कल ये अलग अलग फेसेस पे शेयर स्ट्रेस वगैरह Okay. यही Okay. पढ़ाया था अभी Okay. So this nomenclature is clear to you. So you, as in solid structures also, and I will follow the same convention, although in certain textbooks what I have taught is there, but in majority of the textbooks this convention is also followed, so that you don't confuse things. So we will be following this convention throughout the course. I'm pointing out here, that is, if this is sigma x x, then first subscript depicts the surface normal as you are doing in your solid structures, because in fluid mechanics textbooks also majority of them they mention this kind of nomenclature, only few textbooks mention the other. So I will go with the popular sentiment. So this is the direction of the stress itself. So this is consistent with what you are studying in solid structures as well as what is there in majority of the fluid mechanics textbooks also. So any doubts? So first will be the direction of the surface normal, and the second will be the direction of the stress itself. So I will be following this only for your benefit, so that you don't confuse things. You follow a single convention. Is that clear? Any यस doubt? So if I ask you principal stresses are the stresses which are only which normal to the surface, which are normal to the surface. So what does that mean? Wait for a second. Say I'm drawing a fluid element here. I draw stresses like this. So this is sigma xx, so this is sigma yy, this is again sigma xx, and this is sigma yy. So please remember, principal planes are the planes on which there is zero shear stress, and there is only normal stress. So can you let me know in this case which planes are principal planes? Which planes are principal planes in this case? हाँ, which planes are principal planes in this case?
सर सारे ही हैं सर, चारों के चारों। So AB, A B B C BC, C D CD and AD, all of them are principal planes. Now if instead of this I had something like this, say I had something like this. So what are these? So if I mark them A, B, C, D. Now, do you have any principal planes here? Any plane which is having only normal stress but zero shear stress. So you see that AB, BC, CD or AD, all of them have only shear stress. So these are not principal planes. यानी क्लियर है? सर AB पे टाउ XY नहीं होना चाहिए? AB पे टॉ XY, एक सेकेंड, AB पे टॉ XY. Okay, no, I have just I think you have joined late, I don't know. So we have actually narrowed down to this convention now because this is much more popular. The first subscript represents the direction of surface normal and this represents the direction of stress itself. Any clear है? Yes sir. Because in your solid structure also you are following this convention, and in many textbooks also of fluid mechanics this convention is much popular. So I am going with this convention. सॉलिड स्ट्रक्चर्स में ना हमने जैसे AB पे जो शियर स्ट्रेस है उसको हमने टाउ XY पढ़ा था। tau XY AB पे यस सर। और BC पे सर BC पे YX। नहीं, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, बिकॉज आई हैव बोथ कन्वेंशंस आर करेक्ट बट मोस्ट पॉपुलर कन्वेंशन इज दिस वन ओनली, दैट इज फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट्स the direction of the surface normal and the second represents the direction of the stress itself. जो आपने ऐसे पढ़ा होगा, पता है क्यों दिया होगा कहीं टेक्स्ट बुक्स में? Because you will study in your later classes or later lectures that this is also true. Tau xy is equal to tau yx, tau yz is equal to tau zy, and tau zx is equal to tau xz. So this is called complementary shear stress property. You will study in solid structure about this. So shear stresses are equal here, that is tau xy is equal to tau yx. That's why in certain cases you might have swapped these two. Clear है? So please no discussions please. And clear है? Any doubts? So principal stresses, so please remember principal stresses are stresses on principal planes. Principal stresses are stresses on principal planes. So if there are no principal planes which are visible to you, it means here you cannot define principal stresses here. Any clear hai? Any doubts? Likewise, now if I come to this part, wait for a second. So now let me know if I have something like this. So this was sigma xx. This was tau, what should I write down here? This should be tau xy. This is tau yx. And so this is sigma yy. And this is, say, again sigma xx. This is sigma yy. And this is tau yx. And this is tau xy. Again, I mark the planes. Now, is there any principal plane here? Is there any principal plane here? Anyone?
Any plane is principal plane here No, or sir. not? हाँ No जी. principal. No principal plane, because what is the condition for principal plane? Shear stress Shear 0. stress should be 0. And you don't have any kind of plane in which shear stress is 0. But we have a very innovative method to find out principal stresses. I will give you one example of it. Say if I ask you, for instance, this is some coordinate system, say x, y, and say this is z. I have a vector defined like this v. What are the components? What are the components of this vector? What is this equal to? V cos theta, that is Vx, and this is Vy is equal to V sin theta. So it has Vx component as non-zero, Vy component as non-zero. Now, can you actually represent the same vector V in a coordinate system in which Vy component is 0 and Vx component is equal to total magnitude of the V vector? Can you transform this coordinate system to a coordinate system in which I have this condition? So we can shift the coordinate system by theta angle. You can shift the coordinate system by theta angle. Theta. What does that mean? Now your xx dash will be somewhere here and y dash will be here. So what do you know now? This vx dash is the total vector v, and vy dash is 0. Any clear hai? Any doubts? So likewise, with the same philosophy, if this was the case, say this was the case, I am drawing here without writing down the values itself, I am only drawing the arrows. This was in XYZ coordinate system, or say XY coordinate system. I can write down it like this. Now please be careful in this. I am writing down here like this. Can I write down like this? Any doubt? Can I write down this as this? Yes, sir. Now this, in this configuration, this was not, you didn't have any kind of plane that was principal plane. But in this configuration, what has happened? These planes are now principal planes. And this is called as stress transformation. Stress transformation. That is, you are transforming the coordinate system so that you can represent this equivalently like to this. Now, if I ask you to find out what is the stress tensor here, how will you do it? How will you do it? If I ask you to find out the stress tensor at point, say, this is say point P, and this is again point P, what does that mean? How can you represent the matrix here? What is the general matrix if you remember? Sigma इसमें जो xx. सर हाँ जी बताइए. सर जो सेकंड फिगर आपने ड्रॉ करी है x डैश y डैश वाली, इसमें आपने सर टाउ को 0 क्यों कर दिया? खाली आपने नॉर्मल स्ट्रेसेस शो कर रहे हैं ना, मतलब हाँ हाँ. तो ऐसा क्यों करा आपने, टाउ को हटा दिया? अच्छा, आप ये बताओ, इसको आपने इससे शायद पहले देखा नहीं. मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था मेरे पास, इसमें ये वेक्टर v था, ठीक है? यस इसके x कंपोनेंट भी थे, y भी कंपोनेंट थे, यस सर, b cos थीटा भी सही है. ठीक है? अब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे कर दिया, मान लीजिए ऐसे, और अब क्या हुआ, जो v वेक्टर है
वो किस डायरेक्शन में है? इसी डायरेक्शन में। यस सर। ये x डैश है, ये y y डैश डैश है। है। अब मुझे बताओ vx डैश नॉन जीरो होगा और vy Yes, sir. डैश क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है सर। जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हो? यस सर, यस सर। तो ये मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं ओनली फॉर माय ओन बेनिफिट। ठीक है सर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। So in this case, in the first case, if I write down the stress tensor, so this is sigma xx, sigma yx, tau zx, tau xy, sigma yy, tau zy, tau xz, tau yz, sigma zz. So now help me. What about this case? Which terms will be zero and which terms will be non-zero? In case one. In this case, how will you fill these equal to? Sigma xx is non-zero or zero? You have sigma Non-zero. xx. Non-zero. This is non-zero. Which terms are zero here? If you see here, this is two-dimensional. So which terms can I put zero here? Z terms. Z terms. term. Tau zx. So I can put Yes sir. this term as zero, this term as zero, this term as zero. So these terms will be zero. And I am Zero. only left with which four terms? These in red. हाँ जी, क्लियर है? What about Sir, the? हाँ जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, प्लीज स्पीक आउट अगेन, योर वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। हेलो। सर मैं कैसे एलिमिनेट हाँ जी, टर्म कैसे एलिमिनेट होगी? Z टर्म कैसे एलिमिनेट होगी सर? एलिमिनेट कैसे होगी? अच्छा, हाँ सर, एक बार सर वो डायरेक्शन का समझा दीजिए सर। ये एलिमिनेट क्यों होगी? अब जैसे सिग्मा एक्स एक्स है, ये क्या सिग्मा वाई वाई, यस सर। ये क्लियर है? जी सर। ये टू डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। यस सर। टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में तो अगर ये पॉइंट है मेरे पास, आई नो दैट आई हैव स्ट्रेसेस इन ऑल द डायरेक्शंस। यस सर। मेरे पास इस डायरेक्शन में भी होना चाहिए, वो सिग्मा एक्स एक्स हो जाएगा। इस डायरेक्शन में हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, इस वाई वाई। डायरेक्शन में सिग्मा जेड जेड, और Z। लाइकवाइज हर जगह हो जाएगा चीजें। यस सर, यस। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या पता है कि अगर सिग्मा जेड जेड का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जैसे आप किसी भी थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम को टू डायमेंशन में कन्वर्ट कैसे करते हो? सर हम एक प्लेन ले लेते हैं सर, कोई भी सर। हम क्या ले लेते हैं? सर प्लेन ले लेते हैं ना सर हम लोग। जैसे अगर मैं आपको पूछूं, ये मैंने एग्जांपल आपको बोलूं, आपके पास एक बहुत बड़ा मान लीजिए, एक ऐसे करते हैं, मान लीजिए एक स्पून था, ठीक है, और यहां पे आपकी गैस जल रही थी, ठीक है, जी तो आपका टेम्परेचर वेरी कहां से मैक्सिमम किस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी? सर, हीट तो सर स्पून के हेड में सर जो है सबसे ज्यादा सर हीट फ्लो होगी ना सर। हाँ, तो मतलब स्पून भी नहीं लेता मैं, मान लो ऐसे कर लेता हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड, से आई हैव this say this rod, say I am drawing this rod, say this is a very rod like this, ठीक है, आपने इसके नीचे you have put this on a burner, तो टेम्परेचर जो वेरिएशन होगी वो इस डायरेक्शन में ज्यादा होगी कि इस डायरेक्शन में ज्यादा होगी? सर सर वाई डायरेक्शन में से ज्यादा होगी एक्स वाई, तो किस डायरेक्शन में होगी टेम्परेचर वेरिएशन? सर, वाई में से ज्यादा होगी सर, क्योंकि सर हीट सोर्स के ज्यादा करीब है सर वो वाला एरिया। टेम्परेचर वेरिएशन, अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, दोनों का टेम्परेचर तकरीबन बराबर होगा। ओके ओके, हाँ सर तो एक्स में वाला वेरिएशन की बात है, हाँ, एक्स में वेरिएशन, से मैं टेम्परेचर वेरिएशन पूछ रहा हूं। ये मान लो पॉइंट सी है, यस सर। तो बी और सी में टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा होगी।
जी सर, BC में ठीक है? ज्यादा होगा AB तो की आप तरफ से। कोई भी जब डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करते हो, वो क्यों डिफाइन करते हो? क्योंकि आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि उस वेरिएबल का क्या वेरिएशन है विद स्पेस और टाइम। यस सर, बिल्कुल सर। तो क्या आप इस डायरेक्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन लगाने का कोई मतलब बनेगा? नहीं सर, कोई मतलब नहीं सर, मोर और लेस सेम ही है सर, मोर और इसलिए। लेस सेम हो जाएगा, आप समझ रहे हो? जी सर, तो इसलिए लाइक एलिमिनेट हो जाएगा। वाइज जब एक डायमेंशन अनइंपॉर्टेंट हो जाए तो हम उसको किस में कर सकते हैं? वी कैन कन्वर्ट द 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम इनटू 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम। गुड। ठीक है, ओके और सर। इसमें देखो, इसमें दोनों में ही होगी। मान लो ये पॉइंट था, ये मान लो डी पॉइंट था, एडी में भी कोई फायदा नहीं, हाँ सर, AD में कोई फायदा नहीं। तो ये 1D प्रॉब्लम होगी। ओके सर, ठीक है, समझ गया सर। तो यू निग्लेक्ट द इफेक्ट्स इन अदर डायमेंशंस व्हिच आर नॉट रेलेवेंट टू यू, या ओके सर। जिसमें आपको पता ही है क्या होना है। ठीक है ना? आप इक्वेशन तो तभी बनाओगे व्हेन यू वांट कि आपको कुछ पता चले जो आपको ऑलरेडी नहीं पता। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक तो यू सर। likewise you have two-dimensional state of stress here at a point. It does not mean that the third stress does not exist. It may be existing, but its relevance is not there. So in that sense, the terms which are containing z, they will go to zero, nearly zero. You will not actually analyze this. You will only analyze the two-dimensional. And is that clear now? And clear? A dash B dash C dash D dash में सर shear stresses जीरो कैसे होंगे, मुझे ये समझ नहीं आ पा रही है बात। इसमें आप इसमें Yes, पूछ रहे हो ना? yes sir. हाँ, अब मैं वही आपको पूछ रहा हूं, जैसे मैंने आपको ये पूछा था कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मेरे पास एक ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, से दीज आर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, से दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x डैश, दिस इज y डैश। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं जब कि v इज इक्वल टू vxi प्लस vyj। ठीक है, और इसको मैं लिखता हूं v इज इक्वल टू vx डैश i डैश कैप vy डैश j डैश कैप। तो v वेक्टर तो सेम ही है, द वेक्टर इज इनवेरिएंट, वेक्टर इज इनवेरिएंट। what can change is the components. So you know that Vx is not equal to Vx dash and Vy is not equal to Vy dash. So if this was vector this was vector V, the same vector V now in this coordinate system is this. So vector V has not changed. The magnitude and the direction of vector is same. That is, whether you do it like this, that is, I am doing it here, Vx square plus Vy square under root. This will be equal to what? Vx dash square plus Vy dash square under root. So this has not changed at all. What has changed is only the magnitude of the components of the vector. तो कोई भी चीज आप ट्रांसफॉर्म करते हो उसको इक्विवेलेंटली लिख सकते हो यहां पे। हाँ जी, आप समझ रहे हैं? हाँ जी, एनीवन, एनी डाउट्स? नो सर। ये क्लियर है आपको? तो उसी टोकन से मैंने क्या किया, मुझे क्या पता है कि ये दो दो इक्विवेलेंट सिस्टम्स हैं ये। जैसे वेक्टर के केस में वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए थी, इसमें इसको डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स चाहिए, और वो स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स दोनों केस में सेम आएगी। वो कैसे सेम आएगी मैं बता रहा हूं। तो इस केस में क्या बन गया ये? सिग्मा xx, what should I write down here? Tau yx, what else here? 0, tau xy, sigma yy, here it is tau yz, so it is, sorry, tau zy, it is 0. Here it is tau xz, so this is 0. Tau yz is also 0, tau z
sigma zz is also 0. This is the matrix for this configuration. And for this configuration, the matrix will become what? Help me write down this matrix for this configuration. Sigma x dash, what else? 0, 0, 0, sigma y dash, 0, 0, 0, 0. So these are equivalent, like we had the other one. In the previous vector example, we could actually write down like this, if you remember. If I write down in case of vectors also, I could write down like this: Vxi plus Vyj is equal to what? Vx dash I dash cap plus Vy dash j dash cap. So I could write down in case of vectors like this. By the same token, I can write down this equation. And this is called transformation. If I am transforming stress, it is called stress transformation. If I am transforming vector, it is called vector transformation. Hani, Naveen, do you have any question? Naveen? Naveen, do you have any question? नो सर वो गलती से हो गया था. Okay. So is that clear now? Any doubts to anyone regarding principal stresses and how this system is equivalent to this system? Any clear? Yes, sir. So principal stresses are stresses on principal planes, and I can actually make a transformation by simply rotating the coordinate system. And this is also equivalent of saying, so this was the point P. If I ask you what is the stress at point P, what else do I need to define? Stress at point P. What else should I also define to define stress completely? On a plane which is oriented in a particular direction. So if I mark this plane, say I mark this plane as this, and you had something like this, I am drawing here. So this was sigma x, and this was a sigma y, this is a sigma xx, and this is tau. Likewise, this is sigma yy, this is sigma xx. Now, stress at point P will be equal to what? The matrix defining all these stresses. The matrix defining all these stresses. That is, if I write down this as tau xy, this is tau yx, this is tau yx, this is tau xy. So if I ask you what is the state of stress at point P on a plane AB, on plane AB, then your answer will be this: sigma xx, tau yx, tau xy, sigma yy. This will be your answer. This defines the state of stress at point P on a plane AB, which is oriented in this fashion. But instead, say I ask you, what is the state of stress on a point P on a plane CD? What will be your answer? Now the plane CD has changed. The point remains the same. What is this equivalent to? What is this equivalent to? Can you relate the rotation of axis with the planes AB and CD? What can you think of CD as? What can you think CD as? Haji. Anyone? Are you getting my point or not?
यहां तक क्लियर है? यहां तक Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. Yes. My question is, you know that if you want to define a vector, you will ask that what is the magnitude and what is the direction. यहां तक क्लियर है? वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए आपको. स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए आपको? जिस पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पे किस प्लेन पे फाइंड आउट करना है वो आपको स्पेसिफाई करना होगा. तो जब मैंने ए बी प्लेन स्पेसिफाई कर दिया, AB प्लेन स्पेसिफाई कर दिया, तो मेरे पास ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस मैंने डिफाइन कर रहा हूं मैं. अगर अब मैं पूछूं आपको ऑन अ प्लेन, AB प्लेन जो है, अगर AB प्लेन, अगर आप ये तो एट अ पॉइंट P हो गया ऑन प्लेन AB. इफ आई आस्क यू अबाउट प्लेन CD, व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल बी योर आंसर? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये आपको क्लियर है इतना सा कि AB प्लेन पे सिग्मा XX और टॉ XY होगा, इतना चीज क्लियर है आपको? ये जो प्लेन है, ये प्लेन इसके पैरेलल है, ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? तो जो जब इन अ लिमिट दिस श्रिंक्स टू 0, दिस प्लेन कोइंसाइड्स विद दिस प्लेन. इज दैट क्लियर? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स, सो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट? Yes, sir. So my now next point is, if instead of this plane AB, I have a plane CD which is not vertical but at some inclination, what do you expect? So can I write down like this? I am now drawing it very carefully. You try to see. I am drawing here. This was ABCD, say ABCD, and these were the state of stresses on these planes. This is as simple as that. So these are the state of stresses on plane ABCD. So it has both shear and both normal and shear stresses. So if I want to find out stress at point P, this is what I have actually assumed around point P, this ABCD. Now if I ask you, I want to find out stress at point P on this vertical line, on a plane which is this AB plane, or say this is say 1-2 plane. On this 1-2 plane, 1-2 plane is similar to the CD plane, CB plane or AD plane. And is that clear? 1-2 plane is similar to CB plane and DA plane. यहां तक क्लियर है आपको? Any doubts? Any doubts? No, sir. Now I am coming to the second point. This is this plane. Now if I ask you a question that I don't want on this 1-2 plane, but I want something on a plane that is like this. So this is 3-4. 3-4 plane is also passing through point P. So what will be the state of stress on plane 3P, 3-4 passing through point P? So is this similar to what I'm showing here? So please remember what I'm doing here is, so this was the original plane ABCD. So this was say ABCD. This was point P, and these were stresses. I am transforming this state of stress to this configuration. Now this is 3, 4, or I should mark like this, not 3, 4. So this is A dash,
B dash, C dash, D dash. Now what has happened is, this was the 1-2 plane. Now the 1-2 plane has gone where? Now what has happened to the 1-2 plane? This is like this now. So this plane, that is the point P, this is point P, and I have rotated, so this is the plane now. So this is your 3-4 plane. So doing this stuff or doing this stuff, they are equivalent. So finding out stress at a point on a plane with different orientation is equivalent to finding out stress on a rotated system that has rotated by, say, this angle theta. So this angle is, say, theta. So finding out stress on a point on a plane which is inclined at some angle theta is equivalent to finding out stress on a rotated system that is rotated by angle theta. This is a very subtle point, and this will be mandatory and most crucial point as far as your solid structures is concerned, fluid mechanics is concerned, mechanics of deformable bodies is concerned. That is, you will study in 3rd year. So please, if you have any doubts, clarify just now. This is very critical for understanding the entire concept. हाँ सर इसमें जो आपका प्लेन है सर 3-4, आपने जो ये फिगर बनाई है A डैश B डैश C डैश D डैश, हाँ ये वाली सर जो इसमें आपने ये लाइन खींची है, मतलब ये 3-4 है या 1-2 है? कौन सी वाली? सर जो आपने लाइन खींची है जो पॉइंट P से पास कर रही है, हाँ ये लाइन 3-4 है या 1-2 है? मतलब 3-4 लाइन है या 1-2 लाइन है? ये 3-4 लाइन है कि 1-2 लाइन है? सर ये वाली A डैश B डैश वाली, हाँ ये वाली, इसमें ये A डैश B डैश वाली? यस सर, मतलब A डैश B डैश जो आपने लाइन खींची है, हाँ जो पॉइंट P से पास कर रही है, हाँ सर वो लाइन कौन सी है? मतलब 1-2 है, मतलब 3-4 है? अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इसको AB को, जैसे अगर मैं इसको बोलूं, ये मान लो इससे किससे एंगल थीटा बताऊं मैं, मान लो ये दोनों में थीटा एंगल था, मान लो 1-2 और 3-4 में थीटा एंगल था। ये क्लियर है यहां तक? यस सर। मान लो 1-2 और 3-4 में थीटा एंगल था, ठीक है। तो अब 1-2 किसके पैरेलल है? 1-2 किसके पैरेलल है? सर 1-2 पैरेलल सर AD और BC है। 1-2 पैरेलल है AD और BC के। तो मान लो ये AD मतलब ये होगी आपकी 1-2, मैं तो यहाँ पे 1-2 बना देता हूँ ऐसे, ये होगी आपकी 1-2, ये 1-2 होगी, यस सर। ठीक है। अब 3-4 कहाँ पे होगी? सर 3-4 इसकी कुछ एंगल होगी थीटा पे। नहीं, थीटा तो देखो, जो ये AB है, A डैश B डैश है, ये सेम एंगल से रोटेट कर दिया मैंने, तो इसका मतलब कोइंसाइड करेगी, मतलब A डैश B डैश के पैरेलल हो जाएगी। यस सर। आप समझ रहे हो? A डैश B डैश के पैरेलल होगी 3-4 वाली, 3-4 वाली। तो ये 1-2 नहीं होगी, ये 1-2 आपने यहाँ पे 1-2 ऐसे नहीं आएगा, ये 1-2 भी किसी एंगल पे होगा। मैं ऐसे बताता हूँ, एक सेकंड रुको। तो मैं 3-4 पहले ड्रॉ कर देता हूँ, देन 1-2 विल यू कैन शो। सो 3-4 विल बी, हेल्प मी टू ड्रॉ 3-4। 3-4 कहाँ पे बनाऊं अब मैं? सर 3-4 सर A डैश B डैश पे, A डैश B डैश पे, क्योंकि सर हमने एंगल थीटा से रोटेट कर दिया ना उसको, हाँ। तो इसको मेरे ऐसे ख्याल से बनाओ, तो उसके दिस इज पैरेलल करेक्ट। आनी चाहिए ना A डैश B डैश पे। हाँ ऐसे, हाँ ये, हाँ सर, यस सर। A dash B dash. So this plane is यस सर। parallel to this plane, yellow plane. यस सर। ठीक है। तो अब ये आपका नया जो 3-4 है, ये आपका 3-4 हो गया, ठीक है। अब 1-2 कहां होगी? 1-2 कहां पे थी? 1-2 तो वहीं पे है। 1-2 की क्या डायरेक्शन होगी? सर 1-2 तो सर ऐसे। यस सर। और दोनों में फिर भी एंगल कितना है? थीटा। थीटा।
Yes, sir. Clear है? Yes, sir. So what I have done is I have rotated the coordinate system so that now you have along this direction. This is the direction of AB. Or you can equivalently say CD, whatsoever you want to say. अगर ये AB है तो इसके ये perpendicular CD हो जाएगी. So I have rotated the coordinate system by the same angle. So this is like saying two things. If this was the object originally, you want to find out the stress at point P on a plane that is vertical. This is like this. So you know that the stresses are shown like this on this plane. So you can actually convert this into a rotated coordinate system like this. So you can actually write down like this now. I am putting it here. So this is so this could be like this. So this is somewhat you are finding at point P on a plane that is red now. So finding out stress at on plane P is equivalent to finding out stress on this rotated coordinate system. This is सर called मतलब stress ये transformation. सर हाँ जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो लाइन है हाँ जैसे जो आपने सबसे पहले लाइन ड्रॉ करी है, मतलब जो दूसरी लाइन आप ड्रॉ करेंगे, हाँ जो वो सेकंड लाइन जितना एंगल बनाएगी मतलब हमारे एक्स के साथ, हाँ हम उतना एंगल से रोटेट कर देंगे मतलब अपने फिगर को मतलब. हाँ रोटेट कर देंगे आप. जैसे अगर मैं यहाँ पे ए बी सी डी बोल रहा हूँ और मान लीजिए मेरे पास ये हो गया ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, तो ए बी और इस प्लेन में ए बी और इस प्लेन में अगर मान लीजिए एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा है बेसिकली. यस सर ठीक है. ठीक है ना, क्योंकि ए बी पहले हॉरिजॉन्टल थी. अब यस सर. ए बी डैश का ओरिएंटेशन किसके बराबर किसकी जैसी हो गई है, जो इसकी है, जो पी से पास कर रहा है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर अगर ये जो एसी हमारा इंक्लाइंड है अभी जैसे, हाँ पर ये इंक्लाइंड ना होके अगर हॉरिजॉन्टल होता एसी प्लेन तो कैसे ठीक. करते हैं इसको? अच्छा हॉरिजॉन्टल होता या सर तो अगर कोऑर्डिनेट इंक्लाइंड सिस्टम को रोटेट करना नहीं पड़ता आपको. तो सर इसमें फिर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तो जो जितने भी थे हाँ वो जीरो ना होते फिर. तो अगर आप ये कह रहे हो, मैं आपको जो आप बात कह रहे हो मैं इसको ड्रॉ करने लगा हूँ यहाँ पे. आप ये कह रहे हो कि मान लीजिए एक सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड. आप ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह से सिस्टम होता ये वाला और इसमें इस तरह से होता, ये मान लीजिए नॉर्मल है, ये शेयर हो गए. अब दो प्लेन्स बना रहा हूं मैं. एक तो प्लेन आप कह रहे हो एक ऐसा प्लेन हो गया मान लो, ठीक है, और एक प्लेन हो गया मान लीजिए ऐसे. यही कह रहे हो आप? यस सर यही कह रहा हूँ. ठीक है, तो अब मैंने इसको प्लेन को मैं मार्क देता हूँ 1 2, इसको मार्क कर देता हूँ से 3 4. ठीक है, तो 1 2 प्लेन किस प्लेन के पैरेलल है? ए बी और सी डी. ए बी और सी डी के. ठीक है, तो 1 2 प्लेन पे कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं? सॉरी, ए बी और सी डी पे कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं? टाउ वाई एक्स. टाउ वाई एक्स और सिग्मा वाई वाई. वाई वाई. ये हैं दोनों. इस पे भी इस पे भी. तो 1 2 पे भी क्या होंगे? सेम ही होंगे. सेम होंगे. ठीक है, और 3 4 पे 3 4 किसके 3 4 पैरेलल है? पे एडी और एडी सी और के. बीसी. सी के पैरेलल क्या है? ठीक है, तो इसमें होंगे सिग्मा टॉ एक्स एक्स और एक्स वाई और एक्स सिग्मा एक्स एक्स. एक्स एक्स. ये क्लियर हो गया? यस सर. तो अब इनमें से कोई प्रिंसिपल प्लेन है? 1 2 या 3 4 प्रिंसिपल प्लेन है? नहीं, नो क्योंकि सर. इन पे क्या है? नॉन जीरो शेयर स्ट्रेस है इनमें. अब मैं एक थर्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं. मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ये एक ऐसा प्लेन है,
एक स्पेशल, ये थीटा पी है मान लो। थीटा पी का मतलब है थीटा की वैल्यू ऐसी जो इसको प्रिंसिपल प्लेन बना दे। हाँ जी, क्लियर है? थीटा कोई नॉर्मल थीटा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे मैं एग्जांपल, प्लीज बी केयरफुल इन दिस। से ये कोई जनरल एंगल थीटा हो गया, ठीक है। मान लो एक और कोई एंगल है एंड से दिस इज अ स्पेशल एंगल एंड दिस एंगल इज थीटा पी। तो थीटा पी का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, थीटा पी एंगल से रोटेट कर दूं, इसका मतलब हुआ कि यहां पे ऐसे था कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को थीटा पी से रोटेट कर दिया। तो अब जो मेरे पास यहां पे सिस्टम आएगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो थीटा पी रोटेटेड है, मान लीजिए ये आ गया मेरे पास, इस पे क्या होगा? सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस इस पे थे, नॉर्मल और शेयर दोनों। सो दिस इज अ स्पेशल केस वेयर थीटा इज इक्वल टू थीटा पी। लेकिन ऐसे भी हो सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। मान लो थीटा थीटा पी के बराबर नहीं है तो ऐसे होगा। मान लीजिए ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये मान लीजिए एक्स पी है, ये वाई पी है, तो ये सिग्मा एक्स 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 पी हो गया, ये सिग्मा वाई पी हो गया। मान लो एक थीटा एंगल होता दैट इज नॉट इक्वल टू थीटा पी, तो मैं क्या करता? तो मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे हो जाता, मान लीजिए ये था एंड से दिस एंगल वाज थीटा सच दैट थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा पी, सो देन द कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हैज लेड टू दिस काइंड ऑफ अ थिंग। तो यहां पे इस तरह से आएगा। Now again, these planes are not principal planes, but now the stresses here are not similar to the stresses in this. So this will be now sigma xx x dash x dash. This is tau x dash y dash. This is sigma y dash, and likewise all others. So you can actually rotate the axis by any arbitrary angle, but there is only one special orientation, that is theta corresponding to theta p, which will make sure that the planes now are principal planes. हाँ जी, क्लियर है ये? हाँ जी, आप क्लियर है आपको? सर मतलब कि थीटा पी पे रोटेट करने के बाद शेयर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा, मतलब है ना? थीटा पी रोटेट करने के बाद हाँ वो मतलब अगर थीटा कोई पी थीटा आर्बिट्ररी ओरिएट कर रहे हो और वो थीटा पी के बराबर नहीं है, बट तो हमें कैसे पता कि थीटा पी की क्या वैल्यू है? हाँ, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? ये थीटा पी की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए सर। थीटा पी कैसे निकाल सकते हो आप? जिसमें क्या चीज जीरो हो जाए? टाउ जीरो हो जाए। हाँ, टाउ जीरो हो जाए। तो आप जब डिराइव करोगे तो जब थीटा पी निकालने के लिए आप यही आइडेंटिटी को यूज करोगे, मतलब आप शियर स्ट्रेस जो होगा उसको जीरो पुट कर दोगे, उससे जो थीटा की वैल्यू आएगी वो थीटा पी हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी तो आपने मोहर सर्कल भी पढ़ रखा है? सर, पढ़ाएंगे सर अभी सर। अच्छा, मोहर सर्कल पढ़ाएंगे नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। उसके बाद मोहर सर्कल जब पढ़ लेंगे तो थोड़ा आपको फिर एक वी विल रिविजिट दिस कॉन्सेप्ट, दैट विल बिकम मच मोर क्लियर नाउ। नाउ ये तो क्लियर हो गया। अब अगर एक पॉइंट पे आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, किसी भी पॉइंट पे, आप उसके अबाउट क्या करते हो? एक कंट्रोल वॉल्यूम देख लेते हो। अगर वो टू डायमेंशनल है तो आप एक एरिया देख रहे हो और उसके फेसेस पे आप स्ट्रेसेस डिफाइन कर देते हो, और वो स्ट्रेसेस जो हैं वो सिर्फ नॉर्मल रह जाते हैं इफ इट हैज दैट काइंड ऑफ ओरिएंटेशन, एंड दैट ओरिएंटेशन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू थीटा पी, एंड दोज प्लेन्स, on those planes the stresses are called principal planes. यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? अब आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स में आ जाए हम सॉलिड स्ट्रक्चर से, या आपके पास पानी का ग्लास है, देयर इज सम पॉइंट P. If I ask you what is the state of stress at point P, or find out principal planes, how will you find out? यहां पे पानी भरा हुआ,
स्टेशनरी पानी है, प्रिंसिपल प्लेन की ओरिएंटेशन क्या होगी आपके हिसाब से? हाँ जी, दिस इज पॉइंट P. I am asking you what is the orientation of the principal plane, whether it is this, this, what orientation is principal plane in case of fluid? In case of stationary fluid, सर सारे प्रिंसिपल प्लेन होंगे सर, सारे हाँ जी, so you are absolutely correct, all planes are प्रिंसिपल प्लेन। principal planes. Why? Because you know that stationary fluid does not have any shear stress. ये स्ट्रेसेस तो आप कोई भी प्लेन उठा लें, उस पे क्या लग रहा होगा? सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस। कोई प्लेन उठा लें, ये प्लेन उठाएंगे ऐसे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा, ये प्लेन उठाएंगे ऐसे लग रहा होगा, जो मर्जी प्लेन उठा लें आप, you will have only normal stress. So this is a very special case. This is different from solids. This is a special case and this is called hydrostatic state of stress, where stress is isotropic. This is a very special condition and the only condition in which stress is isotropic. That is, any orientation you choose of the plane at that point, you will get the same value of stress. So this is a very special case and this is called hydrostatic state of stress. This does not happen in your normal solids. This happens only in fluids, and that too particularly certain fluids. Are you clear? Hai? Any doubts to anyone? नो सर। Okay, so you have next class. Sorry. So I will break for today and we will continue with this in the next lecture. Okay. Thank you, sir. Okay.